Assalamualaikum students, मुझे कहते हैं अज़र यशाल एंड यू आर वाचिंग यशाल इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट IELTS रीडिंग। The screen you are seeing that is my IELTS LMS portal which we have prepared for academic and for general training students. आप इसमें क्या देख सकते हैं? For example, these are the programs and in the programs there is academic and there is going to be general training. If you are a student, you are preparing for your academic studies, and you can come here and you can sign up. The website is IELTSYashal.com, www.IELTSYashal.com, I'm sorry. अच्छा, अब यहाँ पे आपके आके कोर्स एनरोल करना होता है। फॉर एग्जांपल, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एकेडमिक, यू हैव टू एनरोल हियर, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जनरल ट्रेनिंग, यू हैव टू enroll over here. Cambridge 10 to 16 general training. जो भी बुक्स हैं हमारी Cambridge 10 to 16, their listening test, their reading test, their this is ball pen writing test, and this is going to be speaking test. We have done all listening, reading, writing, speaking test, and we have prepared their text and we have uploaded over here. So you can practice if you are preparing for academic and you are preparing for general training. Same is the case for general training. You can do this academic and general training both. For example, this is Cambridge 12 reading test 1 general training. This is listening 12 test 1, and this is going to be writing, and this is speaking. And the same tests are over here. Like reading is different, writing is different, speaking and listening, they are the same. What we are going to do, you can come here, you can sign up and you can practice here. आपके सामने मैं एक टेस्ट अभी सॉल्व करना चाह रहा था एक्चुअली। Suppose this is going to be Cambridge book 10. This is listening, reading, writing and speaking. यहाँ से हम एक टेस्ट उठा लेते हैं. This is going to be जब टेस्ट सबमिट करते हैं देन एट द एंड यू कैन चेक योर आंसर्स. तो यहाँ से आप अपने आंसर्स भी देख सकते हैं. Suppose we are coming here, click to start. ये जो नज़र आ रहा है on the left side there is text and on the right side there are questions, right? I am going to do list of headings. Okay, on the right side there are list of headings. These are the questions, then true false not given, and on the left side there is a text. These are the paragraphs A, B, C, D. Why connection is low? Connection is still offline. My internet is working. If I go here, Cambridge IELTS 12 listening test 1. Why it's not working? Okay, coming here. This is the text. European transport system 1990 to 2010, 2 decades हैं आपके पास. This is the situation you are given. What have been the trends and what are the prospects for the European transport system? Okay, these are list of headings. For list of headings, I would recommend you to read first sentence. This is first sentence, and this is going to be the second sentence like this, and this is going to be the last sentence. Read the first sentence, then second sentence, and then last sentence if you want to get the answers of the list of headings. These are A, B, C, D until I, and over here these are the questions like A, B, C, D, E. F example is already given. G, H, and I. What we have to do, we have to read the paragraph A, and after reading paragraph A, we have to find which one is the right answer. Like either it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and then here हमने यहाँ पे लिख देना है. For example, X यहाँ इसका आंसर है, तो we have to write this one X. Okay, okay. Starting from paragraph A, it is difficult to conceive of vigorous economic growth without an efficient transport system. We are actually skimming here, not scanning. For list of heading, you have to skim. Although modern information technologies can reduce the demand for physical transport and facilitating teleworking and teleservices, the requirement for transport continues to increase. There are two key factors behind the trend. What are those two key factors?
For passenger transport, the determining factors the particular growth in the car use. One is growth. The number of cars in European Union roads saw an increase of 3 millions each year from 1990 to 2000, and the next decade EU will see further substantial increase. Okay, यहाँ पे गाड़ियां जो है ना वो बढ़ रही हैं। ठीक है। एक तो आपके पास जो है ना टेलीवर्किंग टेली सर्विसेज आपकी टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, और दूसरा आपका जो 3 मिलियन इंक्रीज हुआ है कार्स के अंदर, ये भी बढ़ रहा है। राइट। यानी कि आप यूं कर लें कि आपको आंसर जो मिल रहा है वो आपको यहाँ से मिल रहा है। ठीक है। ओके। अब हमने क्या करना है? फ्रेश एंड इम्पोर्टेंट लॉन्ग टर्म गोल, नो। चार्जिंग फॉर रोड्स एंड इम्प्रूविंग अदर, नो। चेंजिंग इफेक्ट्स डिस्टेंसेस, नो। टेकिंग ऑल स्टेप्स। हमने देखना है गाड़ियाँ इंक्रीज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। एनवायरमेंटल कॉस्ट, escalating cost, need to achieve transport, rapid growth of private transport. Okay, here it is private transport, and there is car use. Car use and private transport, like, then rapid growth, this is rapid growth. And they are saying here an increase of 3 million cars. Cars are like private transport. So this is going to be the right answer. One के आगे मैं लिखूंगा 8, right? This is going to be 8. Okay. Then we have to read paragraph B. As far as ये देखें लास्ट सेंटेंस से आपको आंसर मिला. As far as goods transport is concerned, growth is due to a large extent change in the European economy and its production. Fine, 20 years as an internal 20 years have been abolished. इसको आप पढ़िएगा जरा पैराग्राफ को. Okay, from here. To reduce the production cost, even though the production site is 100 or even thousands kilometer away, hundreds or thousand kilometers away from the final assembly, यानी कि डिस्टेंस की बात हो रही है, जहाँ प्रोडक्शन है उससे जो यूजर है वो बहुत दूर है. फ्रेश एंड लॉन्ग टर्म, नो. नो. Changes affecting distances of goods may be transported. Distances of goods may be transported. This is going to be 3. Here I'm gonna write 3. Okay, now coming to paragraph C. Mm, the strong economic, if you are preparing for computer delivered test CBT, so उसकी जो डिस्प्ले होगी ना, इट इज गोइंग टू बी सेम लाइक दिस. ये पोर्टल उसी फॉर्मेट पे हमने बनाया. ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज गोइंग टू बी द टेक्स्ट, ऑन द राइट साइड देयर इज गोइंग टू बी योर क्वेश्चंस. So if you are preparing for computer delivered test, this is the right place for you to practice. The strong economic growth expected in countries which are candidates for entry to EU will also be increasing the transport flows and growth rate. The transport economic growth expected in countries which are candidates for entry to EU will also increase transport flows. EU entry and transport flows. Like, इसको अगर मैं देखूं, EU entry, transport flows. EU, is there any? This one, EU. Transport trends in countries waiting EU admission, EU entry. Candidates for entry in EU. Entry and admission, इसके अलावा EU है कोई? No. So this is going to be number 11. Okay, क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ टेक्स्ट को? No, if we have done this. Okay, like ये मैंने आंसर निकाला. For example, this one the answer. Okay, coming next paragraph D. However, new imperative sustainable development offers an opportunity for adopting the EU common policies. एक तो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, न्यू इम्पेरेटिव है, then EU common transport policy, new imperative, then they're talking about 2040, 2020, in place for 30 years.
ये जो पॉलिसी है बेसिकली दे आर अप्लाइंग इट फॉर 30 years. I'm sorry, I'm not feeling well actually. Okay. यहाँ से आपको हमने देखना है कि कोई इम्पोर्टेंट पॉलिसी है और वो 30 years के लिए. Fresh and important long term goal. Long term goal mean long term policy. Long term mean 30 years. Fresh and important जो है, this is imperative. New and imperative. Fresh and important. So it is going to be one. This is one. Fine. Then we have to read paragraph E. Okay, in 1998 समटाइम ऐसा होता है कि व्हेन यू सी द पैराग्राफ तो आपको लगता है कि फर्स्ट साइड में आपको कोई चीज़ नज़र आती है, CO2 emission. Okay, then CO2 emission. If you see numbers 2020, 1113 billion tons. CO2 emissions from transport can be expected by increase in 50% to 1113 billion tons by 2020. Okay, as compared to 39. 739 था वो 1990 में, and 2020 में it is going to be 1113 billion. It means carbon dioxide बढ़ रही है. They are talking about actually environment. Here, no. No. Environmental cost for road transport. This is environmental cost. Like 113 billion tons of carbon dioxide, it is going to be emitted. So we are gonna write this can be the answer. Okay, it is environmental cost 5. I'm writing 5 here. Paragraph F, it is already done. Then we have to go for paragraph G. For paragraph G, at the same time, no, F is already done. The first approach would consist of focusing on road transport solely through pricing. Okay, जो पहली approach है इसके अंदर what you have to do, focusing on road transport solely through pricing. Road transport solely through pricing. ये हमने देखना है. Road transport solely through pricing. Solely mean only. Pricing mean charging. Transport की कोई पॉलिसी है जिसमें पैसा चार्ज करना है, like toll tax. Charging for roads and improving other, no. And improving different हो गया. Changes affecting, no. Taking all steps, no. Environmental cost, no. Escalating cost. Rail transport, no. Transport rebalance, rapid growth plans. Restricting road use through charging policies alone. Alone mean only. Charging policies mean through charging. Restricting road use, road transport. Okay, this is going to be the right answer. It is X. I'm writing X here. Fine. Then the second approach also concentrates on road transport pricing but accompanied by measures like other modes. Fine. यानी कि आपने ये देखा कि रोड ट्रांसपोर्ट भी है और उसके बाद आपके पास अदर मोड्स भी हैं. लाइक देयर आर द टू वर्ड्स in this approach: pricing, other modes. Charging for roads and improving other methods. Methods and modes. This is going to be 2. And the last one is the third approach. Not new compares a series of measures ranging from pricing, alternative modes, okay, targeting investment in the trans European. Okay, there are the three things: pricing, alternative modes. Pricing was the first one, this one. Alternative modes was this one. And here, targeting investment in the trans European network. There is another thing. Okay, fresh and important, no. Charging for road, no. Changes affecting, no. Taking all necessary steps to change transport patterns. This is going to be 4. Okay, this is the way you have to do your list of headings, and I'm gonna submit this. ठीक है?
और बाकी मैं अभी नहीं कर रहा, आई एम ओनली सबमिटिंग दिस वन। देखते हैं कि हमारे कितने आंसर्स ठीक हैं। व्यू रिजल्ट। 8 ठीक है आउट ऑफ 40। अब मुझे नहीं पता कि वो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स कितने थे, हम इसका स्कोर देख लेते हैं। लाइक मैं था रीडिंग पैसेज 2 में, आई हैव टू गो देयर। इन रीडिंग पैसेज 2 these are the list of headings. Okay, the first one is 8 मैंने लिखा था, 8 is the right answer. 3 लिखा था, 3 is the right answer. Then 11, 11 is the right answer. Then 1, 1 is the right answer. E का मैंने 5 लिखा, 5 is the right answer. 10 लिखा था, 10 is the right answer. 2 is the right answer. 4 is the right answer. Okay. ये जो मैंने लिखे थे दे आर द राइट आंसर। अब दे ऑल आर करेक्ट। अब अगर आप चाहते हैं कि यू आर सपोज एक आपका गलत हो गया, अब आप उसको ढूंढना चाहते हैं कि वेर इज द राइट आंसर, यू हैव टू ओनली क्लिक ऑन द लोकेट। लोकेट करेंगे तो यहाँ देखें आपको ये चीज ब्लिंक करती नजर आती है। ओके, इट इज ब्लिंकिंग। आपको फिर भी नहीं समझ आता तो फिर आपने क्या करना है कि आपने इसको एक्सप्लेन करना है। व्हेन यू एक्सप्लेन, तो ये पूरी चीज यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करके बता दी है। यू कैन डू दिस। सपोज दिस इज योर आंसर, आपको गलत है, यू वांट सी, क्लिक करेंगे लोकेट आ जाएगा। इट इज इन पैराग्राफ सी फर्स्ट सेंटेंस। देन इफ यू एक्सप्लेन, तो ये पैराग्राफ सी में, लाइक इन पैराग्राफ सी द ऑथर प्रोवाइड्स मेनी ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट ट्रेंड्स इन सम कंट्रीज विच आर, ये पहला एक्सप्लेनेशन था कैंडिडेट्स फॉर द एंट्री टू ईयू। ये चीज आपको जो है लिस्ट ऑफ हेडिंग देती है। नाउ यू आर कंफ्यूज विद दिस वन, आप इस पे क्लिक करें, ये देखें हाईलाइट हो रहा है थर्ड अप्रोच, और आपको यहाँ से आंसर मिल गया पैराग्राफ आई का फर्स्ट सेंटेंस। देन इफ यू आर कंफ्यूज देन यू कैन एक्सप्लेन। दिस इज वे टू प्रिपेयर। आप इस तरीके से प्रिपेयर करें, आप पोर्टल पे आएँ, पोर्टल पे आके आप जो है ना प्रैक्टिस करें। एक तो आपको फ़ौरन हेल्प मिल जाती है, फ़ौरन आंसर्स मिल जाते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम होता है आप उसको लोकेट भी कर सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। Then you can easily understand. Either you are preparing for academic, you are preparing for general training, you are doing writing, listening, reading, and आप राइटिंग हमें भेजेंगे इफ यू साइन अप द पोर्टल, देन यू हैव टू सेंड योर राइटिंग टास्क। वो राइटिंग टास्क आपके हमारे पास आ जाएंगे। आप स्पीकिंग भेजते हैं, स्पीकिंग हमारे पास आ जाते हैं, लाइक लिसनिंग टेस्ट, रीडिंग टेस्ट, राइटिंग टेस्ट, स्पीकिंग टेस्ट। अंडर रिव्यू इज जीरो। हमारे पास जितने भी आते हैं हम यहाँ से फिर उसको रिव्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज लिसनिंग, 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 दिस इज रीडिंग, रीडिंग। आप राइटिंग भेजेंगे हमारे पास आ जाएगा, आप लिसनिंग भेजेंगे हमारे पास आ जाएगा, और उसके बाद जो है फॉर एग्जांपल इट वाज रिव्यूड, ये हमारे पास राइटिंग आ जाती है। वट एवर द राइटिंग यू डू इट इज़ कमिंग हियर, और यहाँ से फिर हम उसको रिव्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज योर राइटिंग टास्क वन, नॉट अटेम्प्टेड, इस बच्चे ने ये वाला नहीं किया। नेक्स्ट पार्ट उसने ऐसे जो है वो भी नहीं किया, ठीक है। बाकी इसने टेस्ट किए हैं, यहाँ पे नहीं किया, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। फाइन। And here you are given 40 minutes to do writing task 2, and you are given 20 minutes for writing task 1, जो कि आपको करना होता है। अगर आप राइटिंग भेजते हैं तो हमारे पास आ जाती है, स्पीकिंग भेजते हैं हमारे पास आ जाती है। यहाँ से हम बच्चों को बैंड भी देते हैं अकॉर्डिंगली वट एवर दे डिजर्व। ये इस लड़के ने, दिस इज क्वेश्चन राइटिंग टास्क वन, ये डिड दिस। इसी तरीके से इस बच्चे ने जो है ना, ये राइटिंग टास्क टू का क्वेश्चन है और आपने यहाँ पे इसको जो है भेजा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से हम उसको बैंड देते हैं और उस हिसाब से ये चीज़ें हमारे पास होती हैं। खैर ये हमारे एंड पे चीज़ें हैं, आपके एंड पे जो चीज़ें हैं वो आपको करना है। डू दिस, प्रिपेयर दिस, एंड अपने फ्रेंड्स को बताएं। ये बड़ी यूनिक चीज़ है, दिस इज़ द ओनली फर्स्ट पोर्टल इन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन। तो आप इस पे ज़रूर काम करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं और इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। इफ़ यू वांट टू साइन अप सिंपली गो www.iltsyashal.com एंड साइन अप द कोर्स एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग एंड जॉइन अस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।